Hello everyone. In this video, I am doing worksheet number 1, and in this worksheet number 1, question number 8, 9 and 10 will be done of chapter 15 statistics and probability of class 8th of DAV. So question number 8, I am reading the question. The electricity bills in rupees of 25 houses of certain locality for a month are given below. These are the electricity bills, and prepare a frequency distribution table taking the class intervals 300 to 400, 400 to 500, etc. Also prepare a histogram. आपको क्लास साइज देखना है कितना है. 100 minus 300 means 100 is the class size. 500 minus 400 means 100 is the class size. So here check what is the lowest value. So this is 324. Other than 324, check is there any other value which is smaller than this. Yes, it is 312. और maximum value देखो, this is 780. So it seems that this is only the maximum value. तो आपने इंटरवल 300 से शुरू करके 800 तक आपने ख़त्म करने हैं. तो जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि आपको इसकी टेबुलर फॉर्म बनानी है. सो लेट्स मेक द टेबल फॉर द सेम. सो दिस इज द टेबल, 3 columns टेबल. This way, taking scale, lead pencil, you can make the table, and you may make freehand table also. This way. Now here this line for the heading, here this for writing the class intervals, this is for tally marks, and that is another for frequency, right? तो आपको जो दे रखा है वो आपने वैल्यूज लिखनी. एक तो आपको दिया है अमाउंट ऑफ बिल, अमाउंट ऑफ बिल, अमाउंट ऑफ बिल दे रखा है आपको रुपीज में, इन रुपीज. देन इट इज गिवन टैली मार्क्स, देन इट इज फ्रीक्वेंसी, राइट? सो 300 to 400 will be the first interval. 300 to 400. The next interval will be 400 to 500. Next you can take 500 to 600. Next you can take 600 to 700. The next interval you can take 700 to 800. यहाँ तक आपने इंटरवल्स लिए. अब जैसा मैंने पहले भी बताया था, इस इंटरवल में 300 से लेकर 399 तक की वैल्यूज आएंगी. 400 जो रेपिटेशन है तो 400 इसमें आएगा. इसी तरह से यहाँ तक 499 तक की वैल्यूज आएंगी और 500 इसमें आएगा, right? So when there is a repetition of the values, the 500 value will enter in this, means next intervals lower limit. तो कैलकुलेट करते हैं. 300 से 400 में ये है 1 2 3 4 एंड दिस इज 5th. तो अब आपने 5 टैली मार्क्स लगाने हैं. 1 2 3 4, दिस इज 5, right? Now next 400 to 500, आप सभी वो वैल्यूज देखो 400 से लेकर 499 तक जो आ जाए. तो ये है 1 and 2 and 3, 3 वैल्यूज. तो यहाँ 1 2 and 3 आ जाएगी फ्रीक्वेंसी. 500 to 600 चेक करो. 1 2 3 and 4 and 5 and this is 6.
1 2 3 4 5 and this is 6. Now next value you will check from 600 to 700. This is 1 2 3 and this is 4 values. So this is 1 2 3 4. ये आपने टेबल में से प्रॉपरली नंबर्स को चेक करना है कौन से नंबर इस लिमिट में लाई करते हैं. नेक्स्ट है 700 टू 800. तो इसमें सारी वैल्यूज चेक करो. जो 700 से 790, इसमें 800 भी इसमें आ जाएगा क्योंकि आगे 800 की रेपिटेशन नहीं है, राइट. तो ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7. सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7. अब इसका टोटल करके देखते हैं. दिस यू कैन सी हियर टोटल. अगर टोटल सही आ गया इसका मतलब आपका टेबल सही है. 5 + 3 8, 8 + 6 14 + 4 18 + 7 25. तो 25 जो है वो इसकी क्या आ गई फ्रीक्वेंसी. तो 25 ही हाउसेज थे. इसका मतलब आपका टेबुलर फॉर्म जो है वो करेक्ट है. अब आप ड्रॉ करेंगे इसका ग्राफ. तो ग्राफ पेपर लेंगे, राइट. तो ग्राफ पेपर के ऊपर क्वेश्चन नंबर ये वर्कशीट 1 एंड क्वेश्चन नंबर इज 8. ग्राफ आपने ड्रॉ करना है लेड पेंसिल से, राइट. मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहां सीडी मार्कर से ताकि आपको ये इजिली दिख जाए, राइट. तो ये देखो ऐसे आपने ये वर्टिकल लाइन लेनी है एंड दिस वे you will take the horizontal line, right. Now this is x axis and another is y axis. This is the origin. तो x axis के along आपने ये लेना है amount which is in rupees. तो अमाउंट 300 से शुरू हो रहा है और जा कहां तक रहा है 800 तक. अगर आप अपना टेबल 300 से शुरू करते हो तो यहां बनाओगे एक किंक. यहां लिखोगे 300, यहां 410, इसके बाद स्मॉल इंटरवल्स के बाद 500 600 700 एंड दिस इज 800. अगर यहां आप मान लो 100 से वैल्यू शुरू कर देते तो आपको किंक बनाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि आगे सबका 100 का गैप है. यहां पर 100 और 200 वैल्यू शो नहीं हो रही तो आपको क्या बनाना पड़ेगा किंक. एक्स एक्सिस के अलोंग आप लिख क्या रहे हो. आप लिख रहे हो अमाउंट ऑफ बिल, अमाउंट ऑफ बिल एट दैट ऑल्सो इन रुपीज. ये सारा ग्राफ आपको लेड पेंसिल से बनाना है. नाउ द फ्रीक्वेंसीज आर गोइंग अप टू मैक्सिमम 7. तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 एंड 7 विदाउट एनी किंक. किंक क्यों नहीं, क्योंकि वैल्यू सारी रेगुलर है. तो इसको लिखेंगे फ्रीक्वेंसी. नाउ 300 टू 400 देयर इज 5. ये 300 है, ये 400 है. तो 5 कहां पर आएगा दिस एंड दिस, राइट. अब आप इसको स्केल से ज्वाइन करोगे दिस वे. दिस यू हैव मेड अ रेक्टेंगुलर बार. नेक्स्ट इज 400 टू 503. ये देखो 400 टू 500 के इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है 3. सो दिस इज हियर. Now you will join it. This way you will join and this. So this is 3. Next 500 to 600 it is 6. 500 to 600 it is 6. So it is here and this is here. तो आप इसको बार को ड्रॉ करोगे because you are making histogram.
तो रेक्टेंगुलर बार्स में कोई भी स्पेसिंग नहीं होगी 6. Then it is 600 to 700, it is 4. So 600 to 700 we are to take 4. So here you can see this is the value 4. So you can draw the rectangular bar like this way. Next है 700 to 800 is 7. So 700 to 800 और यहाँ आप डॉट लगाओगे ऐसे और ये ऐसे. So this is 7 and you will join it like this, right? अब इसकी लिखेंगे scale. So along x-axis there is one big division is equal to, आप कितने कितने का गैप ले रहे हो 100 में, क्लास साइज क्या ले रहे हो आप 100. सो यहाँ ₹100 आएगा. सो along x-axis one big division is equal to ₹100. Along y-axis one big division is equal to 1 unit. Along y-axis one big division is equal to 1 unit. अब ये है क्वेश्चन नंबर 8. अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9. There are 40 students in a class. Their ages are as follows. Construct a frequency distribution table with one of the class intervals 5 to 10. Draw histogram also. तो यहाँ क्लास साइज क्या लिया गया 10 minus 5 that is 5. 5 का गैप लेना है. इसमें आप सबसे छोटी वैल्यू चेक करो क्या है स्मॉलेस्ट वैल्यू. यहाँ से मुझे 5 दिखा है और चेक करो. So I can observe 5 is the smallest value. Now the highest value 17, 21 भी है और चेक करो. तो 21 is the greatest value here. अब आप इसका क्लास इंटरवल्स बनाओगे किसके लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए, राइट? सो लेट्स स्टार्ट डूइंग द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9. तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टू मेक द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. सो अगेन वी विल ड्रॉ द टेबल फॉर द सेम. So this way I have taken the line. This way and this. Join this. यहाँ this is for headings. 3 columns. One for class interval, one for tally marks and another for the frequency. So let's start. This is 40 students in a class and their ages are given below, right? So what are given? Ages. So you will write here age in years and then it is tally marks and then is frequency, right? So the minimum value also you have seen and the maximum value also you have seen. Accordingly now we will make the class intervals. It is 5 to 10. There will be maximum values between 5 to 10. So you are to check these carefully. Then it is 10 to 15. So I am able to see here that 10 to 15 also there are maximum values. Then 15 to 20. In 15 to 20 there are little less values other than these. And last is 20 to 25. आपने अगला क्लास इंटरवल क्यों नहीं लिया? Because the maximum value was 21, right? अब कैलकुलेट करते हैं 5 to 10 में. So this is 1 2 3 4 5 6 7 8 9. याद रखना आपने इसमें 9 तक वैल्यूज लेनी है.
10 नहीं लेना इसमें, राइट। देन 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18. So 18 is the frequency. Now the next is 10 to 15. So in 10 to 15 there are maximum values. Let's count. इसमें 14 तक लेनी है, इसमें 15 नहीं लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12 13 14 वैल्यूज। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब 15 to 20 में कम है थोड़ी सी वैल्यूज। दिस इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और लास्ट 20 to 25 में तो सिर्फ ओनली वन वैल्यू इज देयर। सो दिस इज 1 जो 21 थी, राइट। तो आप लिखेंगे यहां टोटल चेक करना है इसका। दिस इज 18 and 14 is this is 8 and 4 12, 32 and 7 39 and 1 40. So 40 students were there whose ages were given. Yes, it is correct. Now let's make the histogram for the same. So histogram I am making now for question number 9. Question number 9 of worksheet number 1. So here the class intervals are from 5 to 10. So one horizontal line, one vertical line, this way. And here we will take x-axis. I am just minimizing the focus of the camera so that you can see the full graph, right? So see, this is x-axis and this is y-axis. So x-axis mein you can see we are to represent the ages. So from 5 to 25 these are going. So here origin 0, 5, 10, 15, 20 and this is 25, right? And the frequencies are going maximum up to 18. तो मैं 1 2 की बजाय मैं ऐसे करता हूं, यहां पर 2 4 2 2 का गैप, 6 8 10 12 14 16 or 18. These I am taking. So along x-axis what are you representing? You are representing age in years. Age in years. And along y-axis you are representing frequency. So let's start. This is 5 to 10, it is 18. So 5 to 10 you can show this 18 here and draw. This is 18. No kink has been made on x-axis and y-axis as the values are regular. Next is 10 to 15, it is 14. So 10 to 15, where is 14? This is 14. Join it. This is 14. Next 15 to 20, it is 7.
So 15 to 20. So where will be 7? Here. This is 7. Between 6 and 8. So this is 7. Next, 20 to 25, it is only 1. So this is 20, 25, this is 1. So make a small rectangular bar here for 1. So we have drawn the histogram for question number 9. Now we are to write the scale. Along x-axis, one big division is equal to 5 years. Ages are written along x-axis. So there is a gap of 5. So one big division is equal to 5 years. Then along y-axis, one big division is equal to 2 units because there is a gap of 2 to 2 units. So this is the histogram for question number 9. Now we are to do question number 10. This is yearly savings in rupees of 30 students of class 7th are given below. Prepare a frequency distribution table with one of the class intervals 30 to 40. तो 30 to 40 से उसने आपको एक आइडिया दिया कि आपको क्लास इंटरवल का जो क्लास साइज है वो कितना रखना है 10. 40 माइनस 30 क्योंकि 10 आएगा. अब आप इसमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करो. सो यू कैन चेक हियर 27. अब इससे छोटी कोई वैल्यू देखो, इससे छोटी कोई वैल्यू नहीं है 27, राइट. तो मीन्स आपको पहला इंटरवल कंपल्सरीली 20 to 30 चाहिए, राइट. अब मैक्सिमम वैल्यू देखो 82 के बाद कोई और 83 है, राइट. तो आपको अपने इंटरवल 90 तक लेकर जाने हैं, राइट. सो लेट्स ड्रॉ द टेबल फॉर द सेम. क्वेश्चन नंबर 10. We will represent it in tabular form. So this is table for the same. Three columns are to be made in the table. This is first column, second is for tally marks, and third is for frequency. This is for headings. So let's start. The first is in savings in rupees. Savings in rupees. The next is tally marks, and the next is frequency. Now the first tally mark will be 20 to 30, and the last value will be taken up to 90 because there was 81 value also. 30 to 40, then 40 to 50, then 50 to 60, then 60 to 70, 70 to 80. Right? Now one more is needed, 80 to 90, because 81 value also existed. Now 20 to 30 you check how many students are there. Ensure कि 30 ना इसमें आए, 29 तक आए, इसमें 40 ना आए, 39 तक आए, इसमें 50 ना आए, 50 अगले में आएगा, राइट. तो 20 to 30 में only one value is there, so 1 and frequency 1.
30 to 40 में 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 and 1 6. 40 to 50, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 and this is 6. Next is 50 to 60, this is 1 2 3, हाँ ये 4 और ये 5, 1 2 3 4 and this is 5. 60 to 70, only two values are there, these are clearly written, 1 2 2 values. 70 to 80, 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 4 and this is 5. And the last 80 to 90, these are 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 4 and this is 5. So we will do their total. This is 6 and 1 7 and 6 13, 5 18 to 20 25 and 5 30. So this is 30 total sum and 30 are the students only. So we will draw their histogram now for question number 10. This is question number 10. Intervals are starting from 20 ending on 90 and the frequencies are going up to 6 maximum. So let's start this way. So x-axis and y-axis. This is x-axis and this is y-axis. This is origin. on x-axis 20 30. तो आप क्या करो, यहाँ पर किंक बनाने की भी जरूरत नहीं, 10 से शुरू कर दो. 10 20 30 40 50 60 70 80 and this is 90. And on y-axis the values are going up to 6 1 2 3 4 5 and this is 6. Now 20 to 30 there is a frequency 1. So this is 20, this is 30, the frequency is 1. You will mark a dot here, one dot here, and this you will draw the rectangular bar on 1. Next 30 to 40 you can see it is 6. So where is 6? This. So you will draw the bar for this 6. Next is 40 to 50, it is also 6. So draw the bar 6. Next is 50 to 65. So 50 to 60, this is 5. Then 60 to 70, it is 2. This is 2. Next is 70 to 80, it is 5. This is 5. And 80 to 90, it is again 5. Right? So this we have drawn the histogram. Now I am writing scale. Here you need to write along x-axis. What have you taken? You have taken savings in rupees.
Along y-axis you have taken frequency. So frequency. Now scale along x-axis. 1 big division is equal to rupees 10 because savings are in rupees. Along y-axis, 1 big division is equal to 1 unit because there is a gap of 1. So this was the histogram of question number 10. So in this video I have done question number 8, 9 and 10 for you. Hope you will understand these properly because I have explained each and every point very minutely. If you really understand the questions explained by me, do not forget to like the videos, comment and subscribe the channel if not subscribed so far. Keep the notifications on and do share the link of the channel with others also. Thank you.